Welcome everyone to our YouTube channel UPSC Masterclass. Today we will continue with our lecture of daily dose of PYQs. आज हम पॉलिटी के PYQs देखेंगे and we will see कि what all things we need to take care of and हमें कैसे कैसे इनसे अप्रोच करना है. So let's start. So you can read the question for 10 seconds and then we'll discuss. So yes, consider the following statement. According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect the state from internal disturbances. The Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to a person being held under preventive detention, held for preventive detention. According to the Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. ये तीन हमारे सामने लाए गए हैं. सो पहला वो स्टेटमेंट जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. अगर आपने इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा है, इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आप बिल्कुल जानते हैं कि जो स्टेट है इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स का फेलियर. So in that case, this becomes true. Second, the Constitution of India exempts states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. This is also true. जो एलियन होता है या जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को पकड़ा जाता है, इन दोनों ही लोगों को अंडर आर्टिकल 22 लीगल काउंसिल स्टेट को देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. This is also, if you have read the fundamental rights, you will know. The third thing is a factual question. यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी टफ हो जाती है. So as of now, preventive detention अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ कही जाती है कि ये इसे पोटा एक्ट का नाम दिया गया है और इसके अंदर ये आप अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को या पिछले कुछ समय के करंट अफेयर्स को चेक करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ काफ़ी बार न्यूज़ में रही है. सो इन दैट केस यू विल नो दैट इसके इस एक्ट के अंदर एक सर्टेन रैंक के ऑफिसर के ऊपर के ऑफिसर के सामने अगर आप विटनेस एज अ विटनेस बयान देते हैं, दैट विल बी एडमिसिबल. अब बात यह है कि हम यहाँ पे यूपीएससी मास्टर क्लास में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि इनसे हिंट्स क्या लेनी चाहिए ताकि हमें बेटर प्रिपरेशन हो सके. सो एज फार एज अपर टू क्वेश्चंस आर कंसर्न, दैट इज सिंपली एफआरस एंड इमरजेंसी. तो ये तो बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस है, नथिंग मोर देन दैट देयर. बट ये जो थर्ड है, इसके लिए आपको करंट अफेयर फोकस्ड और ज़्यादा होना होगा. यही सजेशंस हो सकते हैं कि आप ज़्यादा करंट अफेयर फोकस होंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड होगी. इन दैट केस ये राइट है, ये राइट है, ये थर्ड वाला रॉन्ग है. ओनली टू बी इज द आंसर. अब सेकंड क्वेश्चन, अगेन यू रीड इट फॉर 10 seconds एंड देन वील कंटिन्यू. So, a bill amending the constitution requires a prior recommendation of the President of India. Second statement, when a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent. Third, the constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority and there is no provision of joint sitting. Right? So as far as a bill amending, जो first statement है, that is absolutely wrong. That's straight away factual statement. If you have read the Parliament chapter in Lakshmikant, you should know this. When a constitutional amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent. ये भी बिल्कुल सही है. 24th amendment.
से ये चीज़ लागू होती है. Any provision of the constitution can be amended by the parliament. The amendment made it obligatory. ये amendment जो है ये obligatory बनाता है president को to give his or her assent whenever it is presented to the president. Third, a constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision of joint sitting. ये भी पूरी तरह से सही है. ये सिंपली पार्लियामेंट चैप्टर आपको पढ़ना होगा एंड आप अगर आपने ढंग से पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा है तो यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन. दीज आर प्योरली स्टैटिक क्वेश्चंस. दिस जस्ट से एंड आपको एक हिंट देता है ये चीज़ कि आपको कितना ज़्यादा स्टैटिक पे ध्यान देना है. इवन इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन करंट अफेयर्स यू कैन नॉट इग्नोर स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस. Now third question, read it for 5 minutes and माफ कीजिएगा, read it for 10 seconds and we'll continue. Okay, so first statement, the Constitution of India classify the ministers of into 4 ranks: cabinet minister, minister of state and independent chair, minister of state and deputy minister. ये इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कॉन्स्टिट्यूशन doesn't defy 4 categories of ministers. This is a wrong statement, factually wrong statement. इसे आपको याद होना चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट है. 91st अमेंडमेंट से एक्ट से ये चीज़ लागू हुई है जिसमें ये कहा गया कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा आपको नहीं रखना है अपनी कैबिनेट की स्ट्रेंथ. सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बी इज द आंसर. और इसमें यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में इट वाज अगेन बी वाज द आंसर. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, रीड फॉर 10 seconds, we'll continue. Okay, so let's continue. Which of the following is or are exclusive powers of Lok Sabha? To ratify the declaration of emergency, to pass the motion of no confidence against Council of Ministers, to impeach the President of India. Right? To ratify the declaration of emergency is a wrong statement. लोक सभा जो है वो रिवोक कर सकती है इमरजेंसी, मगर ratify नहीं कर सकती. Ratification has to be done by both the houses. In absence of Lok Sabha, Rajya Sabha कर देती है, then the first session of Lok Sabha has to continue with it. But you cannot ratify. This is a wrong fact statement. Similarly, to pass a motion of no confidence against Council of Minister. Now this is a right question. ये लोकसभा के exclusive powers में आता है. To impeach the President of India, again wrong. Both the houses has to do it. If one house does it, the another house has to be as a verifying house, and उस house में president of India वो अपना representation भी देते हैं. So both the houses has a role to play in this. So it's a wrong statement. So in that case, B is the answer. Again, if you see, मैं इसमें अगर आपको फिगर करने की कोशिश करूँ कि इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना चाहिए, so you see purely static questions हैं. 100% स्टैटिक क्वेश्चंस हैं. स्टैटिक पे जब तक आपकी कमांड नहीं है तब तक करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. करंट अफेयर्स की अपनी अहमियत है, ये बात ठीक है, मगर स्टैटिक का जब तक आप एकदम एक्सट्रीम कमांड नहीं लाएंगे तब तक वो चीज़ प्रॉब्लमैटिक ही रहेगी. तब तक आप बहुत ज़्यादा हाई स्कोर शायद ना कर पाएँ. इसीलिए इस चीज़ पे ध्यान दें. रीड इट फॉर 5 seconds, 10 seconds एंड वील सी.
Okay. So, fifth question. With reference to anti-defection law in India, consider the following statement. The law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months from of being appointed to the House. Again, a purely factual question. Let us read the text for anti-defection law, which says that as per the anti-defection law, a nominated member of the House becomes disqualified for being a member of the House if he joins any political party after the expiry of 6 months from the date on which he takes his seat in the House. Thus, he or she can join a political party before the expiration of 6 months after becoming a member. You see the wordplay here. एक वर्ड प्ले के साथ आप देखेंगे तो दिस बिकम्स ट्रू. दिस इज अ ट्रू क्वेश्चन. दिस इज अ करेक्ट क्वेश्चन. सो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है बिकॉज यू सी विथ इन और आफ्टर का अंतर हो जाता है. सो इस वर्ड प्ले पे भी ध्यान रखना है. यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है आफ्टर और विथ इन में. जैसे यहाँ पे इन्होंने विथ इन दिया है, कोई इंसान जिसने स्ट्रेट अवे पढ़ा हो वो एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा कि 6 मंथ्स का कोई टारगेट तो था, वो गलत ही होगा, उसे गलत मार्क करके आएगा. बट दिस इज अ राइट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन. Secondly, second statement, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. This is also a correct statement. This is a correct statement, purely factual and a correct statement. So that makes the answer, the first one and the second one, the answer. Take two. Fifth question, with reference to anti-defection law in India, consider the following statement. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. This is a wrong statement. He can join. ये cannot नहीं आएगा, यहाँ पे can आएगा. He can join any political party within 6 months. What he cannot do, he cannot join is after 6 months, because otherwise he ceases to be a member of the House. He has to join. In that case, उसके बाद, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. This is a correct statement. Purely factual statement. Anti-defection law जो है, anti-defection law is a very, very important topic. If you want, tell me in the comment section. I'll make a dedicated video on anti-defection law, explaining all the nuances, and you will understand. But यहाँ पे आप देखें, it is a very, very correct statement. It is a very factual statement. There's no doubt about it. So with that, it will become option number E is the right answer. Now question number 6. Read for 10 seconds and we'll continue. Okay, let's start. Considering the following statement, Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. This is a wrong statement. Only Attorney General is provided. Only Attorney General is provided. There is no mention of Solicitor General anywhere, which gives them the right to attend the parliamentary meetings. Only Attorney General has the right to be heard. Right to hear the parliamentary meetings and participate in those meetings. Secondly, according to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. The Attorney General serves at the pleasure of President of India. So in that case, if the president decides, only then he has to resign. There is no mentioning that if the government of India of that day resigns, then the Attorney General also has to resign. So it's a wrong statement. So in that case,
Neither 1 nor 2 is the right answer. Then comes question number 7. Read it for 10 seconds and we'll continue. Okay. With reference to the Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. As per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. This is a correct statement. Date जो है Deputy Speaker की वो Speaker fix करता है. And please tell me in the comment section who will fix the date for the election of the Speaker of the House. डेप्यूटी स्पीकर की तो स्पीकर करता है, स्पीकर की कौन करता है? प्लीज़ बताइए मुझे. Statement number 2. There is a mandatory provision that the election of the candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either principal opposite party or the ruling party. Nope. There is no mentioning in the Constitution. Constitution इस टाइप का कोई भी मैंडेट नहीं देता है जो कि ये कहे कि दोनों ऑपोजिट पार्टी से होने चाहिए. Third statement, which is in case the deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling. This is absolutely a correct statement. ये बहुत बार बहुत जगह established है कि deputy speaker जो है वो as a speaker preside करता है house पे when the speaker is not present. So he exercises similar powers as the speaker himself. The fourth statement, the well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that a motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. पहली बात तो ये चीज़ गलत है कि PM has special role in the parliament. PM is like any other MP. Secondly, there is no established procedure. Constitution doesn't allow any parliamentary practice to move a motion for the selection of deputy speaker. This is a wrong statement. So in that case, first is right, second is wrong, third is right, fourth is wrong. So what do we have here? We have 1 and 3 as right. Right? Okay. Question number 8 छोटा ही है, so यहाँ पे आप पढ़ लीजिए. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates what? The directive principles of state policy. Article 39. Concentration of wealth should be avoided. ये चीज़ आर्टिकल 39 कहता है साफ साफ शब्दों में. ये चीज़ सो इन दैट केस DPSP स्ट्रेट आंसर. सिंपली अगर आप FRs को रीड करेंगे, DPSP को रीड करेंगे या फिर आप FDs को यूज करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सवाल आप कर पाएंगे. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. DPSP इज़ द राइट आंसर. Question number 9. What is the exact constitutional status of India on 26 January 1950? So we all know that during emergency 42nd amendment was introduced. 42nd amendment was introduced. इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को लाया गया था. सो सोशलिस्ट और सेक्युलर अगर 42nd अमेंडमेंट के साथ लाया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी तो फिर 1950 में ऑब्वियसली वो नहीं हो सकते. सो देयरफॉर यहाँ पे देखें सोवरेन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आ गया, सेक्युलर आ गया, ये स्टेटमेंट गलत है. सोवरेन सेक्युलर, सेक्युलर आ गया, ये स्टेटमेंट गलत है. अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, a sovereign democratic republic is the right answer. Question number 10. A constitutional government means a representative government of the nation with federal structure, a government whose head enjoys nominal power, a government whose head enjoys real power, a government limited by terms of the constitution. A constitutional government is a government which is bound by the constitution. So in that case, it's option number D. सो ना जब आप 9th एंड 10th क्वेश्चन देखते हैं ना, सो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं. सो अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे तो एटलीस्ट आपको इन क्वेश्चंस में या इन जैसे सिमिलर क्वेश्चंस में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये 2023 में भी ये सवाल आ रखा है
इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से रिलेटेड, फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड, व्हाट इज़ लिबर्टी, एक सवाल आता है बहुत अक्सर। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, मगर ये रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन्हें ढंग से तैयार करेंगे तो आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। On that note, this is the end of today's lecture. This is your host and your mentor signing out. Thank you so much.